Now we will talk about feedback mechanism that I was talking. Self-regulation action of hormone, meaning it will regulate itself. Okay, by some kind of signaling, it will regulate itself by negative feedback loop. Why negative? Because secretion of one hormone is suppressing the effect of another one. Okay. So high blood sugar, it is more insulin. Sugar lower हो जाता है because of insulin, and then less insulin is produced. जहां पे हमारा ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ गया, एंड ऐसे जैसे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा, शुगर लेवल हमारा कम हो गया. ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस एंड इट विल जस्ट डाउन द सेल ग्लाइकोलाइसिस. एंड देन ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस जैसे शुगर लेवल कम हो गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. सेम वे पे पिट्यूटरी एंड थायराइड लूप, यू हैव पिट्यूटरी, इट विल रिलीज TSH टू एक्ट इन थायराइड, राइट. देन थायराइड विल रिलीज thyroxine, and this high level of thyroxine will act on pituitary to stop production of TSH. So what happens is, now as the TSH increases, it gets positive feedback. As positive feedback increases, thyroid releases thyroxine. इसका लेवल ऊपर आ जाता है. जैसे ये यहाँ पे हमको नेगेटिव फीडबैक मिला, एंड जैसे ही नेगेटिव फीडबैक मिला, TSH का जो प्रोडक्शन है वो लो हो गया. So this is what is called as feedback loop or feedback mechanism, where one specific hormone, it can be many, but there are multiple example of this feedback loop. Most of the hormones in your body act in some kind of feedback loop. Okay, it is either this or that. So what happens, as the feedback increases, or as the amount of hormone that is released by a specific gland increases, it acts on the associated glands. All other associated glands either get stimulated or inhibited. मतलब उनका काम का जो एबिलिटी है वो आइदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है. ओके, स्टिमुलेट मतलब इंक्रीज करने का एक्टिविटी, इनहिबिट करना मतलब डिक्रीज करने का एक्टिविटी. ओके, सो ये आइदर स्टिमुलेट और डिस्टिमुलेट और होता है. तो डिक्रीज होने के साथ साथ वो दूसरे ऑर्गन को या फिर अपने ओरिजिन ऑर्गन को सिग्नल देता है. ओके, इवन sometime this also happens. For example, thyroid is releasing thyroxine, right? This thyroxine itself will give negative feedback to thyroid gland itself. Okay, for example, insulin gives negative feedback to pancreas itself. So these things are very interesting, and these are also very primitive things. Okay, you have to understand them.